one and all. Myself, Asweta Singh the same. I am Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of IIMT College of Engineering. Today, the topic that I chose is preparing for the new normal, challenges and the solutions ahead. So, well, I could have taken off any particular technical topic. My domain is in robotics engineering. I could have gone through the robotics engineering, all the domains and the purses. But my motto and my benefit is that I want to share the knowledge that we all are facing, that what is COVID-19 and what are the challenges and how is the new normal. So stay tuned with me and be with me in all of the session, and just still for half an hour, I will be letting you know that what are the challenges and how we are going to be live and we are going to live the new normal. That what is new normal, isn't it? So yes, now, let me go through that. We all are hearing this term that COVID-19, isn't it? And I think COVID-19 was a term that came to know to us in the month of December 2019. And that epidemic, it was epidemic at that time, and it started out in Wuhan, China. And what happened? It didn't have that impact on our life because we thought of it is not going to affect us so much, isn't it? ये हमारी लाइफ के रूट को हिलाएगी नहीं, और शायद हम it's not going to let us know that what are the phases that we are going to do that, isn't it? So now then what the things are there after this, in the month of February to March, WHO declared it to be pandemic. That means not only China, not only Italy for that matter, it struck all across the globe. All of the humankind was at halt. Everyone was at halt. Every human, no one was prepared. That is the thing, that is my PPT that I want to share with you, that about this particular challenges that are going to be there. Were you prepared? Just ask yourself. We were living the normal life, isn't it? We didn't knew that ki wherever we will be at that particular amount of time, we will be at halt, isn't it? And then it is a type, what is COVID-19? This is a coronavirus. It's a type of the virus that affects our humans and in the respiratory tract system of our body. And the vaccines are in the phase 1 and the phase 2 trial. The problem in getting generation of this vaccine is what? Because this virus is in the RNA track of our body. If it would have been DNA, it would have been very easy to get through that, but it's not. It's in the RNA. That means it is much more challenging, isn't it? Then after that, the thing that came, you all know that what are the problems, that what are the symptoms, isn't it? The coughness, the dry cough, fever, tiredness, and nasal congestions. All these are the symptoms that led to coronavirus or the COVID-19. And 2002 and 29th May 2020, I checked the WHO their website, and I found that 5.7 million cases across 216 countries. Well, today is 5th June, and happy World Environment Day, because I will be taking both of the thing. That means I will be taking about your this coronavirus, as well as then how it is impacting the climate change, how the world is going to be the environment in the term of the world, it is going to be impacted. Okay, so first of all, the very first challenge that that it came to us is that the lockdown, isn't it? Our government, for that matter, it announced that lockdown 1, lockdown 2 to lockdown 4, and now we are in the phase of unlocking 1.0. So I'm not going to discuss the unlocking 1.0, but I am going to let you know about the lockdown, that what are the challenges that we faced during this particular 2 months, and after facing all these challenges, how we are going to be there after these 2 months, isn't it? That means July, when the month of the July will come,
No matter how hard we'll try, no matter how much resistance we will be having in ourselves, but we do have to come out, isn't it? And why do we have to come out? That is the second challenge. That is the economic impact, isn't it? You all are very well aware of the fact that how the economy is so badly and adversely just being impacted, the GDP of our country and everything are like so much, it is very much impacted. The MSME sectors, the daily wage workers. I mean, whose survival, whose existence is per day wages, and they're not even getting that, you know. And these are the things that are really, really affecting. And henceforth, be it the industries, be it your education sector department, be it all of the technical departments, everything came to halt. You know, that is the, you cannot fight nature. Just imagine. I think my class students, the you all very well aware of the fact that I always used to tell you that, ki, okay, see, I'm delivering the lecture, and this particular flash of the time, a new technology has been invented, isn't it? You all must be aware of that, and it is all so much always like that. Ki, a new technology is there, and in my 50 minutes of the lecture, एक कार डेवलप हो गई होगी या कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, ये है ना। तो हमारी लाइफ इतने फास्ट पेस पे चल रही थी, इतने फास्ट पेस पे एंड हमने मतलब सेकंड का क्या, हमने सेकंड को बाइफरकेट करके नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट करके हमने अपने लाइफ को उस नैनो सेकंड में डेवलप कर रखा था। डेवलप क्या, हम डेवलप्ड हो रहे थे, चाहे हमारी कंट्री डेवलपिंग में हो, बट आवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल ऑफ द ग्लोबली पैंडेमिक situation that how it is affecting all other countries, but I'm an Indian and I will be specifically focusing on my country, India. So it was all like that, isn't it? And then how am I going to reach to my students? How my students are going to get to know their semester syllabus, and not only just for the engineering department or any of the colleges for that matter, even the school. The school, let us talk about MHRT. That is, in MHRT, let us talk of the education sector because we all are related to the education sector. So let's talk about that. So what is the solution? And before getting to the solution, हम 2020 में हैं, ठीक है? और आपको क्या लगता है? Just put it yourself. Just comment in the section, in the comment box, in the chat box, that would you really feel that कि क्या ये पहली बार ऐसा कोई situation अकर हुई है हमारे लाइफ में, या ऐसा पहले हो चुका है? The question would be both, you know. ऐसा पहले हो चुका है और ऐसा और आगे होगा, और ये अपने में एक बहुत नया है। कैसे? नो कंट्री, बी इट द डेवलप्ड नेशन, जहां के हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर एट पेस, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे वर प्रोवाइडिंग. Let us come back to our country. We were in the developing phase, and let us go to the least developed. Let's not talk of them. So we need to have no country, no global leader, no industry, no big data scientists, no research scientists. No one was prepared for this pandemic, isn't it? It shook the country, it shook the nation, it shook the earth. And ये 100 एवरी टाइम दिस अकर्स, इससे पहले चिकन पॉक्स आया था, बहुत सारे पैंडेमिक्स आ चुके थे, ठीक है। कोई भी पैंडेमिक सबसे पहले एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक के बाद वो पैंडेमिक होता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये जो पैंडेमिक आया, इसने पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को हॉल्ट पे कर दिया। एंड द मेजर चैलेंज, इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं कि कैसे हम इस इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सके, हाउ कैन वी कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक. फर्स्ट इज दैट let us go out and see it, and then just whatever those people who are contaminated, then हम उनका इलाज करेंगे. But that is one of the reason that जो number of the cases है, they will go or increase, isn't it? The cases will go or increase. Second is that you have to have your contain yourself, lockdown, that most of the countries followed. Second is the proper hygiene, whether you are in the lockdown, and then you have to follow the proper hygiene.
Lockdown and isolation are again yet both different terms. Okay, sorry, quarantine and isolation are again yet both different terms when we are in the lockdown process. So all the airlines, for the first time, Indian Railways stopped. Imagine, for the first time. I think you all must be might aware of the fact when India and Pakistan, they were divided night before the verge of the 1947. At that time, train may there were dead bodies coming, but the train did not stop. Indian Railways never stopped. This was the first time when Indian Railways stopped. Imagine the impact. Imagine the particular type of the epidemic, that the pandemic that has occurred. Indian Railways, be it every other thing, humankind, mankind, everything halted. We stopped, and we had to, because no one was prepared. I was not prepared, you were not prepared, our government was not prepared, our doctors were not prepared. Then what? Quick action. You cannot stop yourself a lot, isn't it? You have to come out, you have to help the mankind, you have to help the humanity, you have to help yourself, isn't it? And henceforth, we did implemented all of the things that, okay, fine, things have been halted, but that does not mean we can't reach you. Thanks to internet, thanks to the internet. And not only to the internet, अगर ये मान लीजिए 1990s का पैंडेमिक होता तो शायद बात कुछ और होती, बट हम 2020 में हैं और हमने अपने आप को बहुत डिजिटली एनहांस कर रखा है, हमने अपने आप को नैनो सेकेंड्स में अपने आप को बांट रखा था. तो सबसे second most thing what came is that be at your place, but do not lose the connection, isn't it? And you have to follow all of these things. Be connected digitally. So the first challenge that is going to be there is that the solution for this lockdown challenge is what? You have to have the digital enhancement. And in those digital enhancement, we came online for you. You came online for us, we came online for you. All our classes, all our everything that came online, isn't it? So we have to go with the journey, and one has to adapt for surviving of the fittest, isn't it? And also, my dear viewers, that who's those who are listening to me, that do understand this thing. We are not in the situation like, for example, we have to realign all of the operations, and it is not now the time that you have to be adamant. You have to be adamant enough that I am not going to change. Okay, I'm not going to change myself, and no matter how everything has been rotated or revolved. My dear viewers, Earth has took the revolution, and it is time for us to rotate along with our Earth. Okay, and जिसे कहते हैं कि हर आपदा के बाद एक कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग होती है, सिल्वर लाइनिंग. एंड दिस पैंडेमिक लेट दैट, अभी कुछ महीने पहले जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा था, क्लाइमेट चेंज बहुत वर्ज पे ही तबाह होने की स्थिति पे था, ओजोन होल अपने, it was all like expanding so much. We took halt, and just imagine that how we were impacting. We were fighting with the nature, and you can fight a war with a human being. A country can have that war thing, but you can never fight with the nature, isn't it? And henceforth, climate change, up to some extent, it got improved. Up to some extent, ozone layer that got diminished, and the air quality index of Delhi, Gurugram, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, for that matter, that got improved, isn't it? So somehow, somewhere, we do have to rethink that these original transformations, and while ensuring the safety of all, people first as the priority. It is no more time to have that competition and all those things. It is now the time to be and being human, isn't it? जब हम कभी plane में जाते हैं और well, you take the boarding, you just buckle yourself up with the belt, and then जब air hostess हमें guide कर रही होती है,
उसके बाद वो ये जरूर कहती है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो मास्क, जो ब्रीदिंग मास्क है, सबसे पहले आप खुद के लगाइएगा, फिर अपने बगल वाले का। तो मुझे गर्व है अपने भारतीय संस्कृति पर कि हमने शायद अपने बाकी सारी चीजों के बारे में ये नहीं सोचा कि हमें अभी इकोनॉमी को देखना है, कैसे देखना है। जान है तो जहान है, और मुझे इतना पूरा भरोसा है अपने सारे भारतवासियों पर कि अगर हम सब ने अगर मिलकर ये ठान लिया, ये जोश में बना लिया कि हम ये करेंगे और इस कोरोना को, इस पैंडेमिक को हम फाइट करेंगे, टुगेदर वी विल फाइट ना, तो ये इकोनॉमी को हम ट्रिपल क्या 10 टाइम्स बढ़ा देंगे। अगर हम हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भारत के हर एक सिटीजन सही है, सुरक्षित है, सेफ है, तो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। और 3 टर्म्स मार्च 2020 से लेकर अभी तक जो हमें पूरे 24/7, I'm on Facebook, I'm on Instagram, I'm seeing what? Mask sanitizer and COVID. I'm reading newspaper, the terms are there, COVID-19, what are the effects? So all these 3 terms have impacted us so much, isn't it? They are there in our head, in our mind all of the time. It is somehow, it is somewhere, it is also like psychologically impacting us. So actually, there was a time when I used to say is that this coronavirus or this pandemic, जो लोग इससे पॉजिटिव होते हैं एंड वो फिजिकली तो इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, और जो लोग नेगेटिव हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो शायद इससे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप इम्पैक्ट हो रहे हो, नहीं, इससे हर कोई इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट का लेवल शायद अलग हो सकता है, वो एक तरह से उसके अगर हम बार और डिफरेंशिएशन सेट कर दे तो वो अलग हो सकती है, बट मैं और आप, हम सब कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। एंड सो व्हाट इज द थिंग दैट कि व्हाट आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट देयर आर 4 R, okay, 4 R framework. First is the respond, second is reflect. If you're able to get it to me, please just do put it in the comment box what the terms that I'm saying. Respond, reflect, reimagine, and rebound. Just put it on the chat box so that everyone should know of this thing, that what these things are: respond, reflect, reimagine, and rebound. It is now the time to put ourselves in the respond mood, not in the reaction mood. We have to be together. And whatever our actions are there, and जब आप कभी भी किसी चीज को, किसी भी सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो एक क्लियर अपाची क्रिएट करता है। हाँ? और अब ये टाइम है कि हम री इमेजिन करें। और इस RE, ये जो RE वर्ड है ना, प्लीज जस्ट डू राइट इट हियर, RE, just write it RE, okay, and dash, RE dash. Put all of the words: reskilling, reimagining, reflecting, everything. You have to do that. You have to do that, isn't it? It is now not the time. See, let me make once myself clear. I think जहाँ बहुत जो बड़े लोग हैं मुझसे, उन्हें ये तो ऑब्वियसली पता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज बता दूं, हम किसी हॉलीडे पर नहीं है, वर्ल्ड हॉलीडे पर नहीं है, कोई भी अपने हॉलीडे पर नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे लॉकडाउन में बैठे, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि वी हैव टू, and if you are at your native place, safe and healthy, what you have to do is that acquire all the skills, isn't it? Just reskill yourself, upskill yourself. You do have to continuously enhance all the capabilities. You have to bring that positive enhancement, positive reinforcement. आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, आपसे जो छोटे हैं उनको, अपने साथ साथ आप उनको भी नई नई सारी चीजें, नए टर्म्स सिखाइए। जैसे आज मैं आपको बताती हूँ कि हम ह्यूमंस, हम भी मशीन हैं, ठीक है। और जो मैं कह रही थी कि ये न्यू नॉर्मल क्या होगा, व्हाट इज दिस न्यू नॉर्मल, हाँ, एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ, ये वर्ड बहुत नया नहीं है, और
ये वर्ड बहुत फेमिलियर है, बट आखिर है क्या ये न्यू नॉर्मल, isn't it? So this particular new normal thing is whatever we are doing, we have to be positively enhance ourselves and we have to live with this thing. आई शो यू दिस थिंग पर्टिकुलर मास्क, ठीक है, ये मास्क है और ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी जो हम सब ने एक वर्ड सुना था कोविडियट, जो कि इसी टाइम पर डेवलप हुआ था, तो वो कौन है और हमें इन्हें कैसे डिफरेंस करना है, और जब हम बाहर आएंगे और इस न्यू नॉर्मल में हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना है कि कोविडियट बनाना है, तो आई हैव द टाइम, आई डू दैट. So the problem is that, okay, so what is there? We do have a room for innovation. We have to build an empathetic leadership and a strong communication, which can go a long way in building the resilience. And there is no need to create an enabling system around the workforce. Also, what is there कि हमें जो हमारे ट्रेडिशनल ऑनलाइन टीचिंग मेथड था, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, चॉक and that pen for that matter, so that has been changed to your online classrooms, whiteboard in the Zoom platform or any other educational platforms are there, ठीक है. तो we have to go from offline to online. हम virtual reality पढ़ रहे थे और हमें लगता था कि VR reality is there, augmented reality is there. Take a moment. Now is the time that we have to be there. We are realizing it. We are in the face of it. We are in the particular time frame of this thing. हम ह्यूमंस, हम भी मशीन हैं, बस हमारे, हम ह्यूमंस की मशीन में और जो रोबोट के मशीन में दो अंतर है. हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है जो ऑलरेडी अक्वायर्ड है बाय द नेचर, जिससे हमने फाइट किया था, और रोबोट जिसे हम बना रहे हैं और हम उसे इमोशनली इंटेलिजेंट करते हैं, बट दैट टू अप टू सम लेवल्स. वो दो तीन टास्क होते हैं जब हम उसको इमोशनली इंटेलिजेंट कर देते हैं. सो देयर इज नो कंपैरिजन. यस, द सेकंड न्यू नॉर्मल इज दैट एवरी इंडस्ट्री, all of the workforces, they will be getting replaced, but you are not getting replaced. So never think of that ki what will happen to my job if robots are taking it, and where will I go? No, no, my dear viewers, no. You are the one who is controlling your robot. Cobot, नया टर्म, कोबॉट. रोबोट का तो जमाना गया, वो 2019 तक ही चलता था. अब आ रहा है कोबॉट, यानी कि वो रोबोट जो ह्यूमन के साथ साथ आपके साथ चले, ठीक है. और थर्ड टर्म जो मैं आपको बताऊंगी वो है herd immunity. HERD IMMUNITY, herd immunity. And what that is अब हमें यही करना है कि we are together in this pandemic. We are together, and not only just India and Indians being together, but being an Indian, you have to be together with all other nations. Okay, and after that, when you are there together, you have to have that particular, अगर हमने सबने ठान लिया ना, इस वायरस को हटाने में 2 महीने भी नहीं लगेंगे. अगर सिर्फ हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे सोच कर एंड टेकिंग अर्थ एज अ होल, I think it won't take a time. I think 2021 we'll be free of this particular virus if we really together, all of the nations together work for this. We are doing it. Somehow we are doing it. And so yes, the next target for us is what? Being safe, being staying at home, but we now have to achieve herd immunity. Just that हमने herd immunity achieve कर ली, then we will be fighting over this particular coronavirus. We will be fighting over this particular pandemic. Okay, and just remember this is only a phase and this too shall pass. We must make sure that it does not create a long term impact, which then it would be very difficult to mend. So let's be together and fight the pandemic situation. If you have any doubt and any query, just I can see. Thank you so much for all the beautiful comments, and my motto and my motive to let you know is that we are together, and we will fight it. So yes, the fourth time, this I will be taking just few more minutes, and that is the term that got developed, that is COVID. That is, COVID में कौन idiot बन गए थे,
ठीक है। सो अब वो कौन है जो फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसको फॉलो ना करते हुए वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के न्यूज को फॉलो करते हैं, उनसे भी बच के रहिए। और अगर आपको पता चल रहा है कि कोई अगर ऐसा है तो उसको वहीं पे कट कर दीजिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे हम कर रहे हैं। जब आप बाहर आओगे आपको मास्क लगाना है, ठीक है, तो मास्क यहाँ लगेगा, ये ऐसे पूरा कवर अप होगा, ठीक है, ये यहाँ नहीं लगेगा और ये यहाँ भी नहीं लगेगा। या अगर आप बाहर आ रहे हो और अगर आपका मास्क ऐसे आ रहा है और आप लोगों से बात करो तो यू आर व्हाट, कोविडियट। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसा दिखे और कोई ऐसा करे तो उसको तुरंत वही टोकिए। क्यों? मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके इधर और आपके उधर सब सुरक्षित है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित बनाना है और अपने साथ साथ अपने सारे लोगों को सुरक्षित बनाना है। और वो अगर हम अब भूल जाइए कि कौन हमें कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ दैट यस, I will fight this pandemic and I will win over this pandemic. India will fight. India will win. And India will follow the social distancing and this mask and the sanitizer thing. ये essentiality हुई है। ये एक सांस ली है ना मैंने, समझ लेना ये मास्क और आपका सैनिटाइजर इसी के बराबर है, इसकी भी कीमत इतनी है। ठीक है, सारे टर्म्स पढ़ो, WHO के जो गाइडलाइंस है उनको देखिए, उनको समझिए कि क्या है, और खुद सुरक्षित रहिए और अपने आसपास सबको सुरक्षित करिए। ये न्यू नॉर्मल है, माना 2021 आएगा, माना, और ये हम सब इसको जीत लेंगे। मैं अपनी राइटिंग से एक कोटेशन आपके साथ शेयर करूंगी, इसके इम्पैक्ट को समझना। जो मुझे सुन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वी आर इन द प्रेजेंट। कोई एक स्टूडेंट, कोई भी एक व्यूअर, प्लीज टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जो बोल रही हूँ प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी आर इन द प्रेजेंट क्रिएटिंग हिस्ट्री, वी आर इन द प्रेजेंट क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर द फ्यूचर, isn't it? हम प्रेजेंट में हैं। आज 5 जून है, 10:30 AM है, ठीक है, और ये अभी 6 जून 10:30 AM हमने एक हिस्ट्री बना दी है। किसके लिए? आगे आने वाले 5-10 साल के लिए। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से इस पैंडेमिक को फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से सारा वर्ल्ड फाइट कर रहा है, जिस तरह से इंडिया फाइट कर रहा है, अब ये गाइडलाइंस बन रही हैं। आगे आने वाले समय में, in near future, whether wherever we are going to fight this. जैसे कि मान लीजिए, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, वी डिडंट हैव दैट पर्टिकुलर गाइडलाइंस। पार्लियामेंट में आराम से कोई भी जा सकता था जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था। आज के टाइम पर नो वन कैन इजिली एंटर द पार्लियामेंट। व्हाई? क्योंकि जब अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई भी ऐसी चीजें आती हैं, तो कोई प्रिपेयर नहीं होता, हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी जो जितनी भी जनरेशन है, thank you so much Abhijit for writing this thing. Yes, we are in the present creating history for the future. That's my writing, and just understand the uh, impact of this thing. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमें अपने आप पे ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक लेसन क्रिएट कर रहे हैं कि हम कैसे इस कोई भी पैंडेमिक आती है, इससे ज्यादा बुरी पैंडेमिक प्लीज आई डू होप सो कभी ना आए, क्योंकि ये जो वायरस है, दिस वायरस वाज वेरी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वायरसेस दैट अकर्ड. So really thank you so much for connecting. If you have any doubt, if you really want to ask me something that हम अपने for the students, specifically for my students, that ma'am how am I going to have myself digitally enhanced? आप अगर जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करती हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना बेस मैकेनिकल बनाओ। ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारे रूट्स है, ठीक है। अब इस रूट को आपको क्या करना है, अपने आप को रोबोटिक्स पढ़ो, मशीन लर्निंग पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, डेटा साइंस पढ़ो, एल्गोरिथम्स पढ़ो, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ो।
सिमिलरली अगर कोई CS ब्रांच का स्टूडेंट है, आप अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर अच्छे हैं तो आप दूसरे प्रोग्रामिंग, जैसे पाइथन इज द वेरी नेक्स्ट ट्रेंडिंग, you learn that. And every internship is now online, and I have been guiding my students, I have been giving them the particular websites jahan pe wo online internships le sakte hain. So enhance yourself, Google is there, it is providing you so many good courses. Enroll yourself into all these courses. And my name is Asmita Singh Desai, and if you are from my college, you know me, you can contact me always for any further clarifications or the doubts if you have in your particular domain area specificity. February 2019 तक I was mechanical and robotics engineer. आज जून 2020 है. Now I am digitally enhanced in digital marketing, innovation and entrepreneurship, in operations management, and all other things. So these webinars are the new seminars. These online certified courses are the next gen thing. तो ये जो डिग्री है, ई सर्टिफिकेट है, secure that. Do the certified courses, do the online courses. Yes, definitely. A mechanical engineering student very well can work in the IT firm. And see, अगर इंजीनियरिंग अपने में जो उसका जो करिकुलम बनाया जाता है, एंड वो अपने में ही एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होता है. आप इंडिविजुअली आपका जो बेस है, ठीक है, वो होना चाहिए आपका पर्टिकुलर जिस आप ब्रांच में है, और उसके ऊपर यू हैव टू पुट इट add-ons, you have to have the bonuses thing in you, learn all those of the particular, all of the things which are in the data science, for example, for that matter, data science बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड है. तो don't worry, if you're really good at it in your particular what to say, if you're really good at it, तो आप आराम से करिए. और मैथ्स है, सिंपल स्टैट्स है, उसको करते रहिए. एंड सो stay connected. Do join, subscribe, and share our channel. I always wanted to say this whenever I wanted to be live. And so, yes, do that and stay tuned for this. Stay home, stay safe, and India will fight this particular pandemic. We are together. Have this notion. Thank you so much.